Hello everyone, I'm Nancer and you are watching Go Turtle Biology classes. Today we are going to study about one of the most important chapters of biology, that is cell, the unit of life. NEET में हर साल near about 6 to 7 questions are being asked from this chapter. Let's come to the introduction part. Here you can see I have classified few living things and few non-living things. Let us first understand how is this living thing different from non-living things. Although both the living things and the non-living things are made up of same type of elements. So there must be a question arising in our mind that if all the things are made up of the same elements, then how does the living and non-living differ? Answer to this question is very simplified here. Characteristics of living things. Let's start in Hindi as well. आपको पता है कि कोई भी लिविंग थिंग्स के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के नाम से चैप्टर 1 ऑफ द बायोलॉजी से पता है। नाउ व्हाट इज़ डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स? कहने का मतलब हम लिविंग को नॉन लिविंग से स्पेसिफिकली कौन से कैरेक्टर के वजह से अलग बोल सकते हैं। वो कैरेक्टर्स दो होते हैं, एक मेटाबॉलिज्म है और एक कॉन्शियसनेस है। मेटाबॉलिज्म is like anabolism and catabolism and consciousness is the response to stimulus, यानी heat में, temperature में, light में, in many other sort of external factors एक living organism किस तरीके से response देता है। Let us come to the basic part from which the living things are made. साइंटिस्ट ने बहुत खोज किया और इस खोज के बाद में पता लगा कि जो लिविंग थिंग्स है ये तो मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो यूनिसेलुलर है, यानी सिंगल सेल के बने हैं। अब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना है तो उसको हम सेल कहते हैं। इसकी डिस्कवरी को हम लेटर डिस्कस करेंगे, बट सेल को हम एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर मान सकते हैं। तो सेल और सेल के अंदर के कंपोनेंट्स जिसको हम सेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, कुल मिला के ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक सेल को लिविंग यानी जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म या कॉन्शियसनेस हो बनाने के लिए। और अगर आप पूछेंगे कि सर सेल के अंदर में ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सेल को लिविंग नेचर का बनाता है, तो बहुत ही सिंपल आंसर है बच्चों। उस सेल के जस्ट बगल में राइट टू द सेल देयर इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। आप देख सकते हैं एक डीएनए स्ट्रक्चर, और ये जो डीएनए स्ट्रक्चर है जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ये रेप्लिकेट करता है, मतलब अपना कॉपी बनाता है। तो जब न्यूक्लियस अपना कॉपी बनाता है तो हमको समझ में आ जाएगा कि द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, यानी सेल रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। लेट अस डिस्कस इट लेटर, बट नाउ वी हैव वेरी क्लियरली अंडरस्टूड दैट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द फंडामेंटल स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज सेल। Moving ahead, in the next slide we are going to understand the levels of organization and how does it functions. शुरू करते हैं एनसीईआरटी के एक फर्स्ट पैरा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज़ इट दैट an inanimate thing does not have which a living thing has. Inanimate का मतलब नॉन लिविंग होता है। इसका बहुत ही सिंपल जवाब हमने इससे पहले वाले स्लाइड में डिस्कस किया है। द आंसर टू दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल मेड अप ऑफ? You can see here the cells are made up of atoms, and these atoms combine together to make molecules. These molecules combine together to make a living form which is called a cell. Few cells of similar origin and function combine together to make tissues. Few tissues combine together to make organs, and few organs combine together to make organ system, as well as many organ systems combine together to make organism. ये levels तो आपने already discuss किया ही होगा अपने previous classes में. Now the point is कि such a complex arrangement is present in complex arrangement किसके अंदर present होता है? In the
Multicellular organism. Exactly. But in the unicellular organism, a single cell is present. So we can consider that the cell एक सेल ही होता है विच इज़ यूनिट फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द होल कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज, क्या ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो सेल के ऊपर हैं, क्या ये लिविंग है? क्या ये लिविंग स्ट्रक्चर्स के फंडामेंटल यूनिट्स कहला सकते हैं? नो, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज फंडामेंटल unit or structural and functional unit of living organism, because they are not living in nature and they do not have a symbolic independent existence. Let us understand in the next slide. Next is, what is a cell? 8.1 of NCERT. Let's begin from the definition of the cell. जैसे कि मैंने बताया, फंडामेंटल है, स्ट्रक्चरल है एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ लाइफ, इज कॉल्ड एज सेल. Now, let us take an example of a brick. Brick is used to build a whole structure of a building. But a brick is the smallest structural unit from which the whole building is made up of. Do you agree? Of course. Now, can we call brick as a building block? Obviously. Similarly, the cells are also called the building block of any complex multicellular living organism. By term 2, not only fundamental, structural and functional, यानी वो खुद भी जिंदा है. Now, let us quote a word from NCERT, that is unicellular organism. Mark my words, I said of a multicellular complex living organism. But क्या एक बिल्डिंग ब्लॉक का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्रेजेंट है? हाँ, हमने देखा है. जैसे कि एनसीईआरटी में भी कहता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. एंड ऑल्सो हाउ टू नो दैट? बिकॉज वी नो दैट a living organism is considered to be living only when it performs the essential functions of life. We can call it as metabolism and consciousness. Yes, I think it is talking about the same thing, performing the essential functions of life. Now, let's take some examples of unicellular organisms. Like, if we classify them into bacteria, so we find E. coli, Streptococcus. These are the rod-shaped E. coli, and Streptococcus is spherical, and Halobacteria. Let's take some other examples like protistans. Amoeba is present, Euglena is present, Paramecium is present. Some algae which comes under plant, that is Chlorella, Chlamydomonas and Saccharomyces yeast. इन सब के इंडस्ट्रियल एंड हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल है. एंड ये जो सेल हैं, इनको हम सेल ही बोलेंगे क्योंकि ये लोग यूनिसेलुलर हैं, यानी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाले सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हैं. लेकिन हम इनको सिंगल सेल भी बोल रहे हैं और ऑर्गेनिज्म भी बोल रहे हैं. सो इट इज़ वेरी क्लियर that the concluding statement is, anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. आप समझे मेरी बात? मतलब एक सेल से छोटा, चाहे वो डीएनए क्यों ना हो, चाहे वो एटम्स क्यों ना हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स क्यों ना हो, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, यानी एक कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर से कम कोई भी स्ट्रक्चर को अगर हम कंसिडर करते हैं, डज नॉट, हम कभी कह नहीं सकते, वी कैन नॉट एंश्योर इट दैट वो part of that cell can independently exist in the form of living organism. So we consider a cell as fundamental, structural and functional unit. Coming next to the discovery part of the cell, यहाँ से काफ़ी सारे questions पूछे जाते हैं exams में भी. Now let's understand that history is a very important aspect of biology. Usually people get bored while studying history, many of us, but this is not the actual fact. Until unless we know how our past was built, we cannot make a new history, right? And nobody is going to study it. So let's be very focused in this particular part also. Robert Hooke, जिसके बारे में आपको पता है कि he was the scientist of mid 1600s, मतलब कैन यू इवन इमेजिन, मिड 1600s का साइंटिस्ट थे. ही फर्स्ट ऑब्जर्व्ड कॉर्क सेल्स. कॉर्क सेल्स नो डाउट वाज अ डेड सेल, मतलब इन्होंने जो सेल देखा था वो डेड सेल था. बट एनीवेज पहला क्रेडिट इनको जाता है जिन्होंने फर्स्ट सेल को लाइव ऑब्जर्व किया था. ही ऑल्सो कॉइंड द टर्म सेल.
कभी कभी सवाल पूछते हैं कि हु कॉइन्ड द टर्म सेल. ऑब्वियसली द पर्सन हु लुक्ड इट फर्स्ट, हु फाउंड इट फर्स्ट, coined the term cell. He wrote a lot of things, a lot of his studies in Micrographia, a book which is placed on the right of Robert Hooke, that is minute bodies, and with his magnifying glass. And this is Hooke's microscope. It's very interesting, although there is no such questions found in NEET and all, but still it's very interesting to look that Hooke microscope scope was a very similar structure, but it was with some special features of oil lamp and water flask, with the objective and focusing screw with barrel and eyepiece, from where the Robert Hooke was observing it. He was a very great architect in this particular part. So moving next, we will see Anton van Leeuwenhoek. Again, he was the same scientist in the period of mid 1600s. First saw and described live cell. Mark my word, it is live cell. यानी जिंदा सेल को देखा था किन्होंने सबसे पहली बार? एंटन वन लीवनहॉक ने. कभी कभी सवाल पूछते उन्होंने कैसे टाइप्स के सेल्स के ऊपर ऑब्जर्व किया था. तो वी कैन सी वाइट ब्लड सेल्स, सम ब्लड सेल्स लाइक वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स. इट इज़ गिवन हियर. ईस्ट के सेल्स, कुछ यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट के सेल्स देखे थे, बैक्टीरियल सेल्स देखे थे, एज वेल एज स्पर्म सेल्स उन्होंने ऑब्जर्व किया था. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था, फ्रॉम हिज सलाइवा, फ्रॉम हिज माउथ ही ऑब्जर्व्ड इट. नाउ लेटर, जस्ट टू गिव यू अ नॉलेज, दैट रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. मूविंग नेक्स्ट, formulation of cell theory. Exactly, there needs to be a theory developed. ये तो cell was observed, but those two scientists above, great remarkable scientists in 1838, Matthew Skeldon, and 1839 to the left is Theodor Schwann. 1839 मतलब एक साल बाद. बॉटनी साइंटिस्ट जो हैं, टू द राइट यू कैन सी 1838 मैथियस स्केल्डन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, हु सेड दैट सेल्स जो हैं वो टिश्यू से बने हैं, मतलब सॉरी प्लांट्स जो हैं वो टिश्यू से बने, और ये टिश्यू सेल से बना, यानी सेल्स आर ऑल्सो द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट्स. And after 1 year, Theodor Schwann, a British zoologist, who said that cells had a thin outer layer, which is today called as plasma membrane. यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी एक तरह से थियोडर शॉन इन 1839 कर चुके थे. इन 1855 द नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने शॉन और शेल्डन के ये फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुले. इन्होंने सेलुलर रिप्रोडक्शन के बारे में कहा, यानी ही सेड दैट एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. यानी कोई भी सेल जो प्रेजेंट है यहाँ, तो इट हैज़ बीन अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल. आई थिंक इट वॉज लिटिल बिट चैलेंजिंग टू द थियरी ऑफ इवोल्यूशन, बट एनीवेज रोडोल्फ वर्चॉ ही सेड दैट एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. यानी एक सेल का होना ज़रूरी है अगर कोई नया सेल रिप्रोड्यूस करता है तो. सो द cell theory now has come into following postulates, that all living organisms are composed of cells and products of cells. All cell arise from pre-existing cells. Thank you so much for listening, but in the next video I'll be explaining about the NCERT 8.3. I suggest that you people keep on reading NCERT, which will help you to understand this in a better manner.